Assalamu alaikum. Welcome back to Silent Films. The topic for today's video is Diffie-Hellman algorithm, which is a cryptographic algorithm for sharing of symmetric key, or you can say secret key. It is itself based on public key cryptography. So let's get started without further ado. Basically, first, both the users share global public elements Q and A, such that Q is a large prime number and A is the primitive root of Q. So for A to be the primitive root of Q, all values between A power 1 mod Q and going to the last A power Q minus 1 mod Q, all values between these values, that is A power 2 mod Q, A power 3 mod Q, and so on till A power Q minus 1 mod Q, all values between in between must, or all these values must be non-repetitive and must be less than Q. So therefore then A will be the primitive root of Q. So first, both users have shared the global public element as per the conditions I told you before this, that both the parameters are Q and A. Now what they will do is, next they will both users will generate private and public keys. So first both of them will select XA, and the next one, that is user B, will select XB. So both of them have decided both of their private keys, that is XA for user A and XB for user B. Now they use their private keys to generate the public keys. So basically this is the public key cryptography, so they will have two keys as the symmetric keys. So they will use this formula YA equals to alpha power XA mod Q. So this is the formula for generation of the private key, just as we did in RSA. So after they have generated their public keys, they will share it with each other, because public keys can be known to both. After they have shared their public keys, they will use their public keys, they will basically use the public key of the other user and its own private key to generate the secret key. The secret key will obviously be same at both ends, because basically they had to share the same key. So they can either use that key for the session, like it can be a session key. When they have to start a session, they can share a specific key which is common to both. Now, as we have seen the working, let's do an example. So if you look at this example, we have been given Q, that is a large prime number 83, and alpha, which is a primitive root of Q. You can also go and verify it. And then we are given the both private keys for the user A and user B, and we have to calculate the public keys for both, and also we have to calculate and verify the secret key at both ends. So we will use the formula for Y equals to alpha power X mod Q, and we get the private keys for both this way. So 5 power 6 mod 83 for the first one, and 5 power 10 mod 83 for the second one. So the public key for user A is 21 and for B is 11. Both of them will share their public keys and then use it to generate the secret key. The secret key formula was YB power XA mod Q. So this way we get the secret key at both ends, which is 9. So we can see that both the secret keys are verified. Now let's look at the theoretical aspect of this algorithm. So first of all, we must know that it is for sharing symmetric key, symmetric encryption key for between two users or more. And then it is limited to this exchange of secret values. That is कि अगर जो है Q और A, YA और YB जो हैं, अगर इन केस ये शेयर नहीं हो पाते या गलत शेयर हो जाएं, तो दिस कैन मेक अ डिफरेंस. सेकंड इज़ कि सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन डिफ़िकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग डिस्क्रीट लॉगरिदम प्रॉब्लम्स.
बेसिक हमारी जो फॉर्म होती है बी इक्वल्स टू ए पावर आई मॉड पी, तो ये डिफ़िकल्ट होगी लार्ज प्राइम्स पे। तो इस एल्गोरिदम की सिक्योरिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि ये हमारी जो इक्वेशन है कितनी मुश्किल होगी, या कोई कंप्यूटर जो इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है वो कितना कंप्यूट कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ के अगर हम क्रिप्ट एनालिसिस की बात करें तो मैन इन द मिडल अटैक कैन बी परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ यूज़र ए एंड यूज़र बी आर कम्युनिकेटिंग, बीच में कोई हैकर जो है he can intercept the communication. So basically what he will do is कि when A shares its public key, तो वो उसको इंटरसेप्ट करके लेगा और वहाँ पे अपने पास जो है दो पब्लिक कीज़ जनरेट करेगा। एक वो ए के साथ शेयर करेगा, जैसे इधर YD2 कर रहा है, तो उसको यूज़ करके ए को लगेगा कि बी ने उसको शेयर की है पब्लिक की, और उसने उस बी को पब्लिक की अपनी भेज दी है। तो वो बी की जो हैकर की पब्लिक की है उसको यूज़ करके ही विल जनरेट अ सीक्रेट की ऑन इट्स एंड, और इसी तरह हैकर भी ए के साथ की एक पब्लिक की सीक्रेट की जनरेट कर लेगा। तो बेसिकली ए जो भी डाटा सेंड करेगा हैकर को, दैट विल यूज़ द सीक्रेट की। जो भी ए हैकर के साथ कम्युनिकेट करेगा, या बी के साथ कम्युनिकेट करने का सोच रहा होगा वो, लेकिन वो हैकर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा यूजिंग द सीक्रेट की KS2। इसके बाद जो है हैकर बी को भी एक पब्लिक की शेयर करेगा सेपरेट, और बी उसको एक पब्लिक की शेयर कर देगा थिंकिंग कि वो ए से कम्युनिकेट कर रहा है। और इसी तरह एक और सीक्रेट की जनरेट होगी बी और हैकर के दरमियान, दैट इज़ KS1। तो अब KS1 के थ्रू जो है हैकर बी से बात कर रहा होगा, और KS2 के यूजिंग KS2 ए से बात कर रहा होगा, एंड दिस वे जो है वो दोनों की कम्युनिकेशंस को डिक्रिप्ट करके चेक कर सकता है कि व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, तो डाटा ले सकता है बीच में से। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर द रीज़न के ये अटैक परफॉर्म हो पा रहा है इट इज़ बिकॉज के सोर्स जो पैरामीटर हम सेंड रिसीव कर रहे हैं, रिसीव जो कर रहे हैं पैरामीटर्स, उसकी सोर्स वेरीफाई नहीं कर रहे। इफ़ द सोर्स वॉज बीइंग वेरीफाइड, तो ए वुड नो कि हैकर है जो बीच में एक अपनी एक्स्ट्रा पब्लिक की शेयर कर रहा है, और इसी तरह जो है बी को भी पता होता, तो फिर हैकर कुछ नहीं कर पाता। मोर ओवर के ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स हैकर के पास हैं जब भी वो इस एल्गोरिदम को यूज़ करके मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।